ये आपकी बुक का टाइटल पेज है, इस वाली का आप देख रहे हैं, मकौनल की बुक है ये, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। इसमें माइक्रो और मैक्रो मिक्स है। हम माइक्रो से रिलेटेड चैप्टर्स जो हैं वो करेंगे इसमें से। फर्स्ट चैप्टर में से हमने ये माइक्रो वर्सेस मैक्रो और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जस्ट ये जो डेफिनेशंस हैं ये मैंने आपको करवाई थी इस चैप्टर में से। फर्स्ट चैप्टर हमने दूसरा मैनकिफ की बुक से किया था। फर्स्ट चैप्टर के एंड पे अपेंडिक्स में जो ग्राफ रीडिंग दी हुई है उसे मैंने आपसे कहा था कि आप अपने तौर पे देख लीजिएगा और उसमें से जो समझ नहीं आई वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ तो पूरी इकोनॉमिक्स में हमने करने ही हैं। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था डिमांड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। Market was studied about what is market, and market is a place, नहीं, it's a concept that where buyers and sellers interact with each other. Place mean कि जहाँ पे बायर एंड सेलर जो से हैं वो आपस में इंटरेक्ट करें, दैट्स कॉल्ड मार्केट। पर इसलिए ज़रूरी नहीं कि कोई जगह हो। इन सम मार्केट्स sellers and buyers are not face to face. For example, on internet, when we shop online, buyers and sellers are at different places, but they are in the same market. And all markets, all transactions in the markets involves demand, supply, price, and quantity. And we studied about demand. Demand is a schedule or a curve that shows the various amount of a product that consumer are willing and able to purchase at each of a series of possible prices. इसमें मैंने आपको बताया था दो पॉइंट है कि कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एंड सेकंड पॉइंट है ही इज एबल टू परचेज। वो खरीदना चाहता भी है और वो खरीद सकता। वो कह रहा था कि मैम को बता देना। So demand shows the quantities of a product that will be purchased at various possible prices. Other thing equals का assumption मैंने कहा था आपने माइंड में रखना है। ये अक्सर मॉडल्स में, अक्सर कॉन्सेप्ट्स में ये assumption फर्स्ट assumption होगा कि other things don't change during our discussion. उसके बाद हमने ये देखा था डिमांड स्केड्यूल फॉर अ सिंगल कंज्यूमर। On y-axis we are measuring price, on x-axis it is quantity, and it is the demand schedule of a single consumer. In price we see that at $5 he is buying quantity 10 units, at 4 he increased the quantity to 20 units, and the price $3 he is buying the 35 units of given commodity, and so on. When we draw these points, we get the first point here, $5 price and 10 units quantity, and when price decreases to $4, quantity increases to $20. So by joining all these points, we get a demand curve which is sloping downward from left to right, showing a negative relationship between the price and quantity. And this negative relationship between the quantity demanded and price is called law of demand.
It is the fundamental characteristic of demand that other things remaining the same, as price falls, the quantity demanded rises, and as price rises, the quantity demanded falls. In short, there is a negative or inverse relationship between quantity demanded, and economists call this inverse relationship law of demand. Demand की definition क्या थी? कि a person who is wanted to buy something and who is able to buy that thing. And what is the law of demand? It is the inverse relationship between the price and the quantity demanded. Why there is inverse relationships? First thing that was diminishing marginal utility of things, diminishing marginal utility of consumption, that when you consume more of a good you want less, it gives you less satisfaction with increasing units, so you want to buy those units at less price. And second, we studied that it is income effect and it is the substitution effect which creates the negative relationship between price and demand. When price of a quantity commodity decreases, purchasing power of a consumer increase, so he buy more of that good. It is called income effect. And substitution effect mean कि when relative price of a commodity is less than the other thing which is a substitute and expensive, you will substitute the cheaper good for that expensive good. So the demand curve is the inverse relationship between price and quantity demanded for any product can be presented on a simple graph in which by convention a mere quantity demanded on the horizontal axis and the price on the vertical axis. वही demand curve जो हमने अभी पढ़ा है, इसकी slope जो सी है वो downward है from left to right, और downward slope क्यों है? क्योंकि it shows the negative relationship between the price and quantity demanded. आज हमने पढ़ना है कि व्हाट इज मार्केट डिमांड. जो हमने पहले पढ़ा दैट वाज द लॉ ऑफ डिमांड एंड वी ड्रा अ कर्व फॉर द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. हमने जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व ड्रा किया था, अगर हम अज्यूम करें कि देयर आर द नंबर ऑफ a lot of there are many consumer in the market and we add the individual demand of all the consumer, we get the market demand curve. हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ अज्यूम किया कि देयर आर ओनली 3 बायर्स इन द मार्केट. अगर उन 3 बायर्स जो से हैं उनकी डिमांड कर्व है एट डिफरेंट डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस, उसको आप ऐड करें तो आपके पास मार्केट की एग्रीगेट डिमांड आ जाती है. ये कर्व किस तरह से ड्रा करना है? पहले आप डिमांड स्केड्यूल बनाएंगे तीनों बायर्स का. अगेन आप प्राइसेस वही ले रहे हैं $5, $4, 3, 2 एंड 1. इस गिवन प्राइस पे जो आपका फर्स्ट कंज्यूमर है, जो ही यहाँ पे उसका नेम गिवन है, he buy the 10 units at $5 and 20 units at $4 and 35 units at $3 and so on. As the price decreases, quantity demanded increases by this buyer. अब हम सेकंड बायर को देखते हैं कि उसी $5 प्राइस पे वो 10 के बजाय 12 यूनिट्स जो है वो डिमांड कर रहा है. इसकी हर गिवन प्राइस पे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड फर्स्ट बायर से ज्यादा है, जिसकी रीजन इनकम इफेक्ट भी हो सकती है कि इसकी इनकम में भी डिफरेंट हो दूसरे बायर से. जबकि जो थर्ड बायर है इसकी क्वांटिटी डिमांडेड हर गिवन प्राइस पे बाकी दोनों बायर से डिफरेंट है, बल्कि दोनों बायर से लेस है. ही इज डिमांडिंग ओनली 8 यूनिट एट द $5 एंड ओनली 17 यूनिट्स एट द $4. अब हम किसी भी गिवन पॉइंट पे ड्रा करना चाहते हैं डिमांड कर्व फॉर द मार्केट. इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इनके इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स ड्रा करेंगे. एट $3 प्राइस हम फिलहाल ले लेते हैं कि मार्केट में हम अज्यूम करते हैं कि इस वक्त जो मार्केट रेट चल रही है प्राइस है वो क्या है? $3 है. इस $3 पे हम देखते हैं कि जोई की क्या डिमांड है? 35 यूनिट्स. जेन की क्या है? $3 पे डिमांड 39 यूनिट्स. और $3 पे जो थर्ड कंज्यूमर है उसकी क्या डिमांड है? 26 यूनिट. अगर आप इन सब को ऐड करें तो ये टोटल बनता है 100 यूनिट्स. तो मार्केट की एग्रीगेट डिमांड क्या है? $3 पे 100 यूनिट्स. इस तरह देर आर थाउजेंड्स ऑफ बायर्स इन अ मार्केट. अगर उन सब की डिमांड को हम ऐड कर लें तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाती है, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड या ओवरऑल डिमांड ऑफ अ मार्केट. जब हमने ये डिमांड कर्व ड्रा किए हैं तो इसमें हम
ने ये अज्यूम किया है, जो कि सारी इकोनॉमिस्ट अज्यूम करते हैं कि द प्राइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, कि प्राइस के चेंज होने से सारी कंज्यूमर की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है, प्राइस बढ़ने से कम हो रही है और प्राइस कम होने से बढ़ रही है। लेकिन प्राइस इज नॉट द सिंगल डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को डिस्क्राइब करने के लिए हम ज़ाहिर प्राइस पे लेते हैं, लेकिन there are some other determinants of the demand, there are some other factors which may change the demand, and we call these factors determinants of demand. जब हम डिमांड कर्व ड्रा करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि these factors don't change during our discussion, या जो हमारा assumption है कि other thing equals, इसका मतलब यही है कि इन बाकी determinants में से कोई भी change नहीं हो रहा, सारे given है, सारे fixed हैं। When any of these determinants change, the demand curve will shift to the right or left. For this reason, determinants of demands are sometimes referred as demand shifter. प्राइस के चेंज होने से आप उसी कर्व पे बता सकते हैं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड जो उनकी है वो कम हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे $3 पे ये शख्स 35 यूनिट्स परचेज कर रहा है, तो प्राइस अगर $5 होगी तो यहीं इसी कर्व पे हम ड्रा कर लेंगे कि ये शख्स 20 यूनिट्स परचेज करेगा। लेकिन अगर इस शख्स की इनकम इंक्रीज हो जाए, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, तो ये कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस आर कॉल्ड डिमांड शिफ्टर। The basic determinants of demand or the demand shifters are consumer taste, जिसे हम preferences भी कहते हैं, the number of buyers in the market and consumer income, the price of related goods and consumer expectations. ये 5 हैं determinants of demand। जब भी इनमें से कोई भी डिटर्मिनेंट चेंज होगा तो आपका डिमांड कर्व राइट या लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए these are also called shifter of demand. A change in one or more of the determinants of demand will change the demand data and so the demand schedule in the table which is given below, and therefore the location of the demand curve change. A change in demand schedule or graphically a shift in the demand curve is called a change in demand. जब भी आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होंगे तो आप इसे ये कहेंगे कि डिमांड हैज चेंज। डिमांड का चेंज होना इंक्रीज भी हो सकता है और डिमांड का चेंज होना डिक्रीज भी हो सकता है। आपने डिमांड का चेंज होना जब भी शो करना होगा, उसके लिए आपको नया कर्व ड्रा करना पड़ेगा कि अगर हम सिंगल कंज्यूमर के लिए ये कहें या ओवरऑल ये एक मार्केट डिमांड कर्व है, तो जब भी डिमांड इंक्रीज होगी दिस कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, D1 से D2 की तरफ शिफ्ट होगा एट द गिवन प्राइस, तो आप ये कहेंगे कि डिमांड हैज चेंज। और अगर D1 से D3 की तरफ शिफ्ट हो, यानी कि शिफ्ट टू द लेफ्ट, वी से दैट डिमांड हैज इंक्रीज्ड। At each possible price then is indicated in column 2, the leftward shift of the demand curve from D1 to D3 in figure 3.3 shows that situation which is described above. अब ये डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी पीछे बताया कि जिनकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, डिमांड चेंज होती है। टेस्ट, आपकी किसी भी चीज़ के लिए प्रेफरेंस इंक्रीज होती है, आपका टेस्ट इंप्रूव होता है, तो आप गिवन प्राइस पे उसको ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं रहा, अब आपको नहीं वो पसंद, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। सेम सेकंड डिटर्मिनेंट इज अली हसनैन। These are the taste, second number of buyers, कि अगर आपकी प्राइस चेंज नहीं हुई लेकिन आपके नंबर ऑफ बायर्स मार्केट में इंक्रीज होंगे तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। थर्ड इज इनकम। एट द गिवन प्राइस इफ द कंज्यूमर इनकम चेंज और consumer income will increase, the demand will increase, and if the consumer income decreases, demand will decrease. Prices of related goods which may cause substitution effect, and there are some goods which are the complementary, and effect of the demand curve will be different for the substitute and different for the complements goods. Substitutes क्या होते हैं कि अगर एक चीज़ दूसरे की जगह यूज़ हो सकती है, तो आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स के साबुन होते हैं या घी होता है, तो एक की कीमत बढ़े
तो अब उसको छोड़ के दूसरा खरीद लें तो डिमांड का जिसको छोड़ा है आपने उसका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, और जिसको आपने चूज किया ज़रा उसका डिमांड का राइट साइड पे शिफ्ट होगा प्राइस के चेंज के बगैर, प्राइस के चेंज की वजह से। लेकिन जिस चीज़ की प्राइस चेंज हुई है उसका नहीं, जिस चीज़ की दूसरी की प्राइस चेंज हुई है कंज्यूमर है या एक सिंगल कमोडिटी है, जिस चीज़ की भी आपने एग्जांपल लेनी है, लेने आपने आटे की ली है तो ठीक है कि आटे की प्राइस ये नेसेसिटी है, इसमें वैसे भी इसका थोड़ा सा इफेक्ट डिफरेंट होता है, कोई बेसिक नेसेसिटी की बजाय एग्जांपल वैसे किसी आम चीज़ की लेनी चाहिए। लेकिन खैर अगर आप इसे भी लें तो इसकी भी प्राइस बढ़ेगी, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी डिमांड कम होगी, बस अगर उसके मुकाबले में चावल सस्ते होंगे तो मे भी लोग वो यूज़ कर लें। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के लिए हमने साथ साथ अज्यूम करना है कि आटे की सप्लाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कंज्यूमर के टेस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कंज्यूमर की इनकम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुई है और वो क्या थी कि प्राइस चेंज हुई है तो उससे डिमांड कम होगी। बाकी ज़ाहिर है कि अगर आप हम ये assumption ना रखें, हम सारी चीज़ें इकट्ठी ले लें, आप साथ ही सप्लाई भी ले लें, आप कहेंगे कि सप्लाई कम हुई थी इसलिए प्राइसेस बढ़ रही हैं। साथ ही आप एक और कंज्यूमर लेते हैं जिसकी इस टाइम पीरियड में इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आटा महंगा है या सस्ता है, तो आपको फिर लगेगा अच्छा ये मेरा लॉ यहाँ आके फिर गलत हो गया। तो जो एक बेसिक लॉ है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसे पढ़ने के लिए कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, सिर्फ डिमांड एंड प्राइस नहीं, कोई से दो वेरिएबल्स के दरमियान भी एग्जैक्ट उनका रिलेशनशिप देखने के लिए आप बाकी वेरिएबल्स को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो चेंज नहीं हुए, तो आप उस रिलेशनशिप को पढ़ सकते हैं, वो कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन ओके मैम। बच्चों? चलिए, पहले आपके पास बुक नहीं थी, आज आप लोगों को मैंने बुक भेज दी है, आप इसमें से देख के आइएगा। कल की क्लास में ये 3rd चैप्टर शुरू से पढ़ना है, 1st चैप्टर में से जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो देखनी है, और अपेंडिक्स में जो ग्राफ रीडिंग और कुछ रूल इकोनॉमिक्स के थे बाकी भी उनको एक नज़र देख लें। तो अच्छी बात है, कल इसमें से फिर कोई भी जो क्वेश्चन हो वो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।